मेघालय सरकार को पूर्वोत्तर के स्कूलों में 10वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य करने के कथित कदम पर केंद्र से अभी तक कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसकी पुष्टि करते हुए शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त करने के बाद इस मामले पर चर्चा करेगी। शनिवार को राज्य भाजपा प्रमुख अनेस्ट मावरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंदी भाषा पर दिया गया बयान एक सुझाव है, न कि हिंदी भाषा थोपना, क्योंकि इस तरह के निर्णय को मजबूर नहीं किया जा सकता है। शाह ने संसदीय भाषा समिति अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा, शाह ने यह भी कहा था कि पूर्वोत्तर के 9 आदिवासी समुदायों ने अपनी बोलियों की लिपि को देवनागरी में बदल दिया है। मावरी ने कहा कि हिंदी सीखने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी देश की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं और यह केवल एक प्लस पॉइंट होगी सीखने के इच्छुक लोगों के लिए। यह बताते हुए कि कांग्रेस शासन के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता था, शाह ने कहा कि सरकार जनता से हिंदी सीखने और हिंदी में कोई भी पत्र लिखने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा, यह गलत विचार है कि भाजपा हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। आजकल हम और अधिक भाषाएं सीखकर लाभ प्राप्त करने के लिए खड़े हैं। मैं अपने बेटे को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि यह छात्रों के लिए राज्य के बाहर नौकरियों की गुंजाइश प्रदान करता है और स्कूलों में हिंदी की शुरुआत करना चाहिए। मावरी ने कहा, ज्यादातर स्कूल नर्सरी से कक्षा 6 तक हिंदी पढ़ाते हैं और यह अनिवार्य नहीं है। शिक्षा राज्य का विषय है और पाठ्यक्रम एम्बोस द्वारा तैयार किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसे लागू किया जाएगा या केंद्र हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर करेगा। Amit Shahji, he was the chairman of that committee, linguistic committee in the parliament. So he has given a statement that in Northeast also, if the government can implement that Hindi should be taught till the class 10. That is suggestion only. It is not that they have imposed the rule or the law that all the students they should take Hindi subject. That is a very wrong statement by someone. I have seen in the paper. Actually, you see nowadays, I have got the children who study in school. Even my son, my daughter, I told them, you taught Hindi also. You learn Hindi also. Because, you know, we cannot hide in India, English, Hindi, they are official language. And it is not first time that the government requests the public in general to write a letter in Hindi to the central office. Right from the during the Congress time also, there is always that Hindi Sammelan in the central office. They request the public to learn Hindi and to write even some correspondence, some letter. It is not new. It is not only the BJP who try to impose that. That is a very wrong idea. You see, nowadays, we have to learn language. If you know more language, it is the benefit of you, of our children, of our kid. Like even myself also, I encourage my son to learn Hindi till class 6. Or whatever the school allowed to learn Hindi. And by learning Hindi, they'll have a big scope. Because language, you know, no? Nowadays in India, especially in the army, in the defense and paramilitary, if you know little bit about Hindi, then it will be a plus point for the future of that young children. And you see, even like myself also, I'm holding now the post of state president of Meghalaya. Whenever we went to Delhi, in some meeting we have to express in Hindi also. Though I'm not fluently speaking in the good Hindi, but somehow I try to learn myself to speak Hindi. So it's good to learn language, but I think this will be the subject of state government also. Whether they are willing or not to go in their syllabus for the student till class 10. And now to from class 6 below till nursery to most of the school, they taught the children in the Hindi. But it's not compulsory. So it is not imposed. And I have said that all the Northeast CM also, they welcome the new education policy. And they want that at least Hindi language also should be introduced
in school to learn about the language. Just for a learning process only. It is not that. I don't think that from the center also they will impose that. You see, actually, this is the subject